Performance management framework. In HR specialization, this topic, performance management itself is very important. As we all know that everything, the training, the compensation, the development, every aspect of an HR work is related with performance. We all as an HR manager or any sort of manager, once we are in management, either we are doing a marketing management, a financial management, anything, we are actually responsible for the output. Now, productivity, what is productivity? That is the ratio of input and output. So what is the input we have given in the process or in the system, and what is the output we are generating? So in the same way, if we wanted to say about the performance management framework, this performance over here, it is related with the performance management of our human resources in an organization. See, this chapter is not available in soft copy. So this is a scan copy. So now we have to understand it in very details. This is a very important topic. So we are actually going through it. Performance management framework is necessary for any organization. See, if we don't go for a performance management, how will we understand that a worker is actually working or not? What the compensation, what is the incentive we actually have to give him, whether we will give him or not. Incentive मिलना भी चाहिए या नहीं, वो भी हमें देखना है. So that is why this development of performance management framework is necessary. We have heard about performance appraisal many a time. We have studied about 360-degree appraisal. So appraisal, we have studied a lot. Appraisal hai, we have studied a lot about appraisal. But simply, if we want to define performance management is actually a comprehensive framework within which it starts from preparing the policy, implementing the policy, and then appraising. Everything is there. Performance appraisal की जब हम बात करते हैं ना कि किसी स्टाफ को हम रिव्यू कर, here we are actually reviewing, हम सिर्फ रिव्यू कर रहे हैं किसी को. But once we are talking about performance management system, this is a standard management system. ये पूरी तरह से एक standard system define कर रहा है. जो start कहाँ से हो रहा है? Starting from preparing a policy. Policy बनाने से लेकर appraisal implementation, then your compensation के ऊपर उसका क्या effect हो रहा है, further उसके ऊपर training या development जो भी चीज लगेगी, तो ये सारी चीजें आपके performance management system में बना होता है. अभी हम लोग environmental factors के ऊपर आ जाते हैं. जब हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बना रहे हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक प्लान बना रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं, सो नो डाउट उसके ऊपर हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों ही एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा, राइट? सो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज एंड नॉर्म्स that are shared by the members of the organization. What is organizational culture? We all know that organizational culture is a collection of values and norms, the attitude, the belief that actually the members of the organization shares among each other. You will find them behaving in a same pattern. Their thinking pattern would be same. They are defining things in terms of targets, incentives, their cultural values, everything will be same. It defines the way in which the members of the organization interact with each other and with the external stakeholders. So definitely the performance management system must be devised in such a manner that it fits in which the existing culture and the value system of the organization. Otherwise, it will result in an undesirable friction between the management and the employees, which might even lead to dismantling of the performance management framework. Here, what we are actually discussing is हमारा जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है वो हम जब बनाएंगे तो वी हैव टू कीप इन कंसिडरेशन द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. Our management system should be in tandem with the organizational culture. If our management system is different and organizational culture is different, then there will be a friction. वो मैच नहीं करेगा. Ultimately जो कल्चर के संग मैच नहीं करेगा. हमने पहले भी बहुत सारी स्टडीज की हैं, इंटरनेशनल बिजनेस बोलिए या एचआर को ही बोलिए, तो हमने बार बार वी हैव स्टडीड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट्स कि सिर्फ कल्चरल इश्यूज के कारण बहुत सारे इंटरनेशनल बिजनेस was a major failure. The culture was the one of the major factor for which one of the best companies become a failure in international business. तो कल्चर को समझना एंड अकॉर्डिंगली वहाँ पे कुछ ऑपरेट करना या कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना इज इम्पोर्टेंट. Organizational structure refers to the hierarchical structure
that helps achieve the organizational objective in the best possible way. Now, organizational structure की जब हम बात कर रहे हैं, it refers to the hierarchical structure. Organizational structure मतलब क्या है? Organization में जो hierarchical structure है, किस तरीके से सारे designation, roles, responsibilities किस तरीके से अच्छे सजाए हुए हैं. आप ये बोल सकते हो. It determines the way in which the organization operates. Organizational structure has an impact on the way performance management is carried out. For instance, in centralized organization, centralized में सारी चीजें at the top of the आप hierarchy की बात करो, वहाँ पे सारे decisions लिए जाते हैं. High degree of decentralization, सारे departments को freedom दी जाती है. So now developing a management framework, performance management framework. Now जब आप performance management किसी भी कंपनी का एक performance management framework बनाने जाओगे, तो सबसे पहले हमने देखा था जब हम कंपनीज में काम करते थे, एचआर में थे, एचआर मैनेजमेंट में थे, तो हम बड़े बड़े कंसल्टेंट्स को हम लोग अपॉइंट करते थे फॉर डिवाइजिंग अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क. मेनली टाटा मोटर्स में हमने देखा है कि once we have to devise a performance management framework, consultants used to come into our organization. They do a stage by process. First they have to examine, that is examine our current culture, which stage is called that stage is called diagnostic review. Diagnostic review का मतलब क्या होता है? हमारे जो current जो organization culture है, उस चीज को analyze करना, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किस चीज की जरूरत है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा. द स्टार्टिंग पॉइंट should be a thorough examination of the strengths and the weakness of any previous arrangement for reviewing performance. तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? कोई भी एक थोरो एग्जामिनेशन मींस कोई भी एक पॉइंट को लेकर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अगर ये एक पॉलिसी थी जिसको इम्प्लीमेंट किया गया था, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है. And understanding of the strategic plans under operation in the organization and an identification of the various stakeholders would be pertinent. During the process, there has to be utmost clarity and on what would have to be done in order to achieve the key objectives of the organization. This would lead to the appraiser to look for the skills and competencies that exist in the organization and would be required in the future to achieve the key objectives of the organization. So this is the diagnostic review. Diagnostic process में organization में आकर पहले organization को study किया जाता है, क्या strength है, क्या weakness है, organization का current stakeholders कौन-कौन है, current culture क्या है. अगर process में आप जाते हो तो वहाँ पे उसके advantage क्या होंगे, disadvantage क्या होंगे, कौन-कौन से stakeholders है जिनके ऊपर इसका impact होगा. Now identifying the crucial drivers. Drivers are the long-term organizational goals that are desired to achieve through the performance management system. Identifying the crucial drivers का मतलब क्या हुआ? क्या चीज है जो हमें ड्राइव करे? That is no doubt our long-term organizational objective. What are our main organizational objectives? क्या achieve करना चाह रहे हैं? For instance, an organization may desire to have a great level of motivation among its employees and increase coordination among the various departments. The KPI would measure the progress in achieving this difficult aim by taking a measurable objective which can be one of the outcomes of achieving the organizational goal. For example, the benefits of greater motivation and coordination in an organization should result in greater revenue earning for the firm. So, crucial drivers क्या है वो हमें देखना है. Crucial drivers के संग हम लोग CTQs को measure करते हैं, जैसे critical to quality होता है ना, वैसे ही यहाँ पर भी होता है KPI. KPI measure करता है, जैसे process को अगर हम क्वालिटी वाइज मेजर करना चाहते हैं तो देयर वी मेजर CTQs. तो यहाँ पर हम लोग जब एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के यही जब इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रहे हैं तो व्हाट आर अवर क्रूशियल ड्राइवर्स, क्या है जो मुझे ड्राइव करने पे मोटिवेट कर रहा है, उसको मेजर करने के लिए हमें KPI इज इंडिकेटर कि वेदर यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट, उसको मेजर करने की जरूरत है ना. हम क्रूशियल ड्राइवर्स की तरफ ड्राइव हो रहे हैं या और कहीं चले जा रहे हैं. So KPI would help us to determine whether we are going in the right direction or not. Typically, the formulated KPI must have the qualities of being specific, measurable, achievable, relevant, and time-based. These qualities are summed up by popular acronym that is SMART. Procedural issues in performance management. What does it mean? जब आप implement करने जाओगे ना performance management, तो बहुत सारे procedural या implementation issues आएंगे.
लाइक स्टाफ मैनेजमेंट में, लाइन मैनेजमेंट में, देयर इज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टाफ एंड लाइन मैनेजमेंट. जो मैंने पहले के जो फर्स्ट सेमेस्टर के टॉपिक्स है वहाँ पे मैंने कवर किया स्टाफ एंड लाइन मैनेजमेंट. So we all know that there's always a conflict between the staff and line management. However, there are various issues that remain entangled here. For example, a division of the division of a centralized organization may have the freedom to decide if it wants to adopt a performance management system. Further, if it decides to adopt such a system, it might have a considerable freedom to decide on how it is going to go about it. Taking the line management and employees along is essential. Some experts feel that the best way to do this is to establish a working group from the same purpose. Now, what is the framework? Framework एक overall totality में मैं एक structure बना रही हूँ जिसके हिसाब से policy, structure, everything framework बन गया, मतलब एक system बन गया, उसके हिसाब से implementation होनी है. तो framework, a crucial step for determining the framework would be to develop an understanding of the various objectives or goals of the organization in order of importance. Related issues are defining and identifying the related competencies that could be required to achieve the desired goals along with the associated desired performance measure. Now, what is framework? Framework आपके पूरे system या policies को define कर रहा है. That is the framework. आपने study कर लिया क्या चीज का impact हो सकता है, आपके goals को achieve करने में क्या competencies की जरूरत है in order to achieve the necessary performance. Now, after that, आपने framework design किया, then you are actually implementing it. An important aspect while devising the performance management system would be to see how it will be implemented. An important aspect in implementation is communication, which plays an important role in ensuring the organizational aims and the desired objective and the various nuances of the performance management system are clearly understood by all the employees. यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, जैसे हमने पहले प्लान किया, अभी इम्प्लीमेंटेशन की बात आ रही है, तो इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो रहा कि नहीं. There should be a clear understanding of the level of performance that has to be attained in order to achieve the desired objective. The information flows would have to be considered, including the feedback and feed-forward loops that would be necessary for an organization to learn from its experience. अभी आ जाता है पायलट टेस्टिंग. हम लोग एक छोटा सा बैच लेकर जो भी इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रहे हैं उसका एक छोटा सा बैच पे टेस्टिंग होगी. एक संग पूरे ऑर्गेनाइजेशन वाइड टेस्टिंग नहीं होती है. पायलट टेस्टिंग एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की जो सिस्टम है उसको हम लोग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करने के लिए एक छोटे ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज के ऊपर टेस्ट करते हैं. गैदरिंग इंफॉर्मेशन. An important component of performance management is gathering information from appraisal. देखिए जब हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात आ जा रही है, तो इट इज यूजुअली डन थ्रू परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस ओनली. नाउ परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस जब आप अप्रेज करोगे कैसे करोगे? यू रिक्वायर इंफॉर्मेशन. आप एक इंडिविजुअल को जब आप अप्रेज कर रहे हो यू रिक्वायर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. एक एम्प्लॉय को जानने के लिए आपके इंफॉर्मेशन क्या क्या जरूरत है. लाइक मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अप्रेजल फॉर्म. मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या होती है जब आप एक अप्रेजल फॉर्म देखते हो वहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं. एक हो गई बेसिक एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, इसका जॉब टाइटल, डिवीजन, डिपार्टमेंट, ऑल दोस थिंग्स. अकाउंटेबिलिटीज, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टैंडर्ड. नाउ व्हाट ही इज अकाउंटेबल फॉर, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है. जैसे अकाउंटेबिलिटी आ गई, आपको ये काम करना है, जॉब डिस्क्रिप्शन से जो मिल जाता है. ऑब्जेक्टिव्स आर डिफाइंड कि भाई आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है. आप ये काम कर रहे हो बट सिर्फ काम करने के लिए फॉर द सेक ऑफ वर्क यू आर नॉट डूइंग. यू आर अकाउंटेबल, दैट मींस यू हैव सर्टेन ऑब्जेक्टिव. अब उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए यू हैव सर्टेन मिनिमम स्टैंडर्ड दैट यू हैव टू फुलफिल. स्टैंडर्ड्स की बात आ जाती है. देन कम द कॉम्पिटेंसीज एंड इंडिकेटर्स फैक्टर. ये एक फैक्टर है. तो आपकी कॉम्पिटेंसीज क्या है, और कॉम्पिटेंसीज है, क्षमता है या नहीं है, उसके भी इंडिकेटर्स हैं. दैट हैज टू बी असेस्ड थ्रू योर सॉरी बिहेवियरल इंडिकेटर. आपके बिहेवियरल इंडिकेटर से हमें समझ में आ रहा है कि आपकी कॉम्पिटेंसीज एक्चुअली है या नहीं. मेजर अचीवमेंट्स एंड कंट्रीब्यूशन. स्टेक होल्डर इनपुट, क्योंकि अभी मैक्सिमम हमारे अप्रेजल्स या मैनेजमेंट सिस्टम की बात करो, यहाँ पे 360 डिग्री 180 डिग्री अप्रेजल यूज होता है. 1 to 1 तो होता नहीं है अभी कि एक सब सीनियर ने आपको अप्रेज कर दिया. तो जितने भी कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं एसोसिएटेड वो अपने अपने इनपुट देंगे. एम्प्लॉय कमेंट्स. एम्प्लॉय सेल्फ अप्रेजल इज आल्सो रिक्वायर्ड. तो खुद के अप्रेजल खुद करेगा. डेवलपमेंटल अचीवमेंट्स, व्हाट ही हैज अचीव्ड एज ऑफ नाउ. डेवलपमेंटल नीड्स, प्लान्स एंड गोल्स. उसके डेवलपमेंटल की जरूरतें कहाँ कहाँ है, नीड्स क्या है, उसकी प्लान्स क्या और गोल्स क्या है.
Signatures, the final section, that is the signature of the employees. Now, जब आप अप्रेजल एक फॉर्म डिजाइन कर रहे हो, ये हर एचआर मैनेजर को इसको देखना चाहिए। जब कोई भी एक एचआर अप्रेजल फॉर्म डिजाइन कर रहा है, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, जब हम थ्योरी पढ़ते हैं ना तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बट प्रैक्टिकली में सब भूल जाते हैं। सो जब प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंटेशन करो तो गूगल से कॉपी पेस्ट नहीं करके, every HR should understand the importance of an appraisal form, how it is to be prepared, for whom it is to be prepared. दो चीज ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत बार पढ़ा बिहेवियरली एंकर रेटिंग्स के, बट प्रैक्टिकल में कितने जन उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, प्रैक्टिकली में कितने एचआर को उसकी नॉलेज है, तो ये हमें जानना है। तो आप लोग सिर्फ थ्योरी के लिए मत पढ़ाई करो, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सोच के करना। तो जब आप अप्रेजल फॉर्म डिजाइन कर रहे हो तो आपको ये देखना, इट हैज टू बी वेरी सिंपल, क्लियर, कंसाइज मैनर में, एकदम बहुत आसानी से कोई भी समझ सके। रेलेवेंट, एम्प्लॉइज जिसको मैं अप्रेज कर रही हूँ उसके लिए रेलेवेंट है। Descriptiveness, that is the rater should be able to understand the points of assessment. ऐसा इतना आप कॉम्प्लेक्स उसको नहीं बनाओ कि वो समझा नहीं सके या समझ ही नहीं सके जो उसको अप्रेज कर रहा है। अडेप्टेबिलिटी, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, definitional clarity, competencies and results are to be clarified for consistency. यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि competencies और result दोनों चीज ही अच्छे से clarified होनी चाहिए। Communication, evaluators should be communicated about the meaning of each component. Appraisal form में जितनी जो चीजें आप दे रहे हो ना, वो चीज communicate करो evaluators को, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, clearly इसको समझाना है, so that he will be able to evaluate it in a very easy terms. Time orientation, ऐसा नहीं कि 2-4 साल दे दो, 2-4 महीने दे दो किसी को अप्रेस करने के लिए। नॉर्मली ये जो रेटिंग होती है ये थ्रू आउट द ईयर को लेकर, मतलब लास्ट में एंड ऑफ द ईयर रेटिंग करते हैं। अच्छी जो बड़ी एमएनसीज है वहाँ पे 2 साल में 2 बार होती है आपकी अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल। बट अप्रेजल का पैरामीटर क्या है, ये जो अप्रेजल होता है इट हैज टू बी ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। इसकी तो रोज की रोज लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और करंटली